Hello, good evening. Today in this session, in continuation to the network security topics, we shall understand what is cryptanalysis and what are various models of cryptanalysis. So before going into the detail, we shall recall cryptology, the science that deals with the transformation of readable messages, that is intelligible messages, into unintelligible form. So this cryptology is basically concerned with the design techniques of the inter-network security protocols, right? So in this cryptography, we know about various techniques to protect our internet work, that is DES, AES, RSA, and etc. Reverse to the cryptography, we have cryptanalysis. Cryptanalysis is concerned with the technique, the methods with which we break the security system, security protocols. There is a breach of security principles, security processes, breaking the code, or uh, and guessing the key, reading the uh, encrypted message, converting encrypted message into the readable form, that is the plain text message, or we can say decoding unreadable messages into readable messages. So here we can see in the network we convert plain text into ciphertext following an encryption algorithm. एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम के थ्रू हम लोग प्लेन टेक्स्ट मैसेज को साइफर टेक्स्ट मैसेज, दैट इज नॉट रीडेबल, दैट इज अ कोडेड फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। और जब ये साइफर टेक्स्ट हमारे नेटवर्क चैनल में होता है, ट्रांसमिशन चैनल में होता है, सिक्योर्ड चैनल में होता है, तो एट दैट टाइम देयर आर नंबर ऑफ थर्ड पार्टीज। तो क्रिप्ट एनालिसिस का मतलब ये है कि ये जो साइफर टेक्स्ट है, अनरीडेबल टेक्स्ट है, इसको एनालाइज करके इसके जो डिफरेंट कोड्स हैं उसको समझ के उसके बाद फिर उसको प्लेन टेक्स्ट मैसेज में कन्वर्ट कर देना, सो दैट कि हम अनकोडेड कोडेड मैसेज को डिकोड करके रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकें, राइट। तो हम लोग सिक्योरिटी सिस्टम में एक्चुअली करते क्या हैं कि कोडिंग जब करते हैं, इंक्रिप्शन जब करते हैं, तो उसमें हम लोग सीक्रेट की का यूज़ करते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ दैट सीक्रेट की वी कन्वर्ट प्लेन टेक्स्ट इनटू साइफर टेक्स्ट। ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि इफ़ एनी अपोनेंट, एडवर्सरी गेट्स एक्सेस टू आवर दिस साइफर टेक्स्ट, right? So even if he attempts to read it, he or she won't be able to read the message, right? Even if the opponent, attacker or hacker or adversary gets access to this ciphertext, he or she won't be able to read the message, because this ciphertext cannot be converted into a readable format, into the plain text, unless the attacker uses the key. So that secret key is kept secret, private to the sender and receivers only. Whether it is symmetric or asymmetric key encryption, in both the cases the keys are kept secret. So unless the attacker uses the key, this ciphertext cannot be converted into plain text. So the attempt of attacker remains on the goal of achieving the key as well as converting this ciphertext into plain text. So cryptanalysis is the technique with which we convert this ciphertext into the plain text. This is the coded form of plain text welcome. So whatever is being transmitted through the network channel, if the attacker gets this message, the message
the attacker won't be able to understand what is written in this. So cryptanalysis is the process of converting this ciphertext into the plain text message, readable format. So here we can see this is sender and this is receiver. Sender intends to send a message welcome through email or through any kind of message using any tool. The sender sends a message to receiver. So before sending, here the plain text message maps into an encryption algorithm. ये जो plain text message है ये encryption algorithm में enter करता है और यहाँ पर हम लोग secret key का प्रयोग करते हैं. तो with the help of that secret key, this message gets converted into this ciphertext. Clear? Secret key के यूज से ये plain text ciphertext में convert हो जाता है जब ये नेटवर्क चैनल से, सिक्योर्ड चैनल से सेंडर के पास से रिसीवर के पास जाता है. At the receiver end, what happens? This ciphertext enters into another algorithm that is called decryption algorithm. And after decryption, this ciphertext message is converted into plain text message and the receiver is able to read the message. This is the normal transmission of messages. Now, here in this secured channel, there might be number of opponents, number of attackers, adversaries who always intend to grab this message, who always desire to get access to this ciphertext. And when they become successful to intercept the transmission, they get the ciphertext. Now, the intention of these opponents is twofold. दो इसके objectives हैं opponent के. पहला, they know very well that the text is encoded, converted into unreadable format with the help of a key. So, the goal of these opponents is first to get the key and converting this ciphertext message into plain text message so that they can read the message. Clear? मतलब कि अपोनेंट्स के दो ऑब्जेक्टिव्स हैं. पहला, सीक्रेट की पता कर लेना, क्योंकि बगैर सीक्रेट की के ये साइफर टेक्स्ट मैसेज प्लेन टेक्स्ट मैसेज में कन्वर्ट नहीं होगा. और जब साइफर टेक्स्ट सीक्रेट की जब मालूम हो गया तो फिर इस साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट मैसेज में कन्वर्ट कर लेना और फिर उसको रीड कर लेना. अब ये दो तरह से अटैक होता है, वो हम लोग पिछले वीडियोस में जान चुके. एक पैसिव अटैक और एक एक्टिव अटैक. पैसिव अटैक में ये जो एडवर्सरीज हैं दे सिंपली रीड द मैसेजेस, दैट्स ऑल, लिसन टू द ट्रांसमिशन, दैट्स ऑल. बट इन एक्टिव अटैक दीज अपोनेंट्स कैन alter the communication, alter the contents of the communication, modify, बदल सकते हैं, उसको बदल देते हैं. Clear? So here is the point where attackers get access to the network and they intend to convert this ciphertext into plain text message. Fine? So cryptanalysis is a technique of decoding a message from unintelligible, unreadable format. This is unreadable format, right? Unreadable format to intelligible format, that is readable format. From unintelligible form to intelligible, readable format. Okay? Without having any knowledge of key. Cryptanalysis is the process of technique of converting unintelligible message into intelligible message without knowing about the key. Or we can also say it is a process of analyzing the ciphertext. Analyzing the ciphertext, coded text, encrypted text, and then converting it into its original form. Original form means plain text, that is readable format, without having the knowledge of secret key. So this technique is used, cryptanalysis is used to break cryptographic security system
gain access to the encrypted messages without knowledge of key. Without knowledge of key means they have only encrypted message. Clear? And they analyze what should be the key. Analyze how? After getting the ciphertext, they attempt to decode the ciphertext and to get the key. So once they get the key, they can convert it into readable message and then to convert it into the plain text message. Okay? We can also say it is a technique of decoding messages from a non-readable format back to its readable format. So cryptographic attacks rely on the nature of algorithm. Cryptographic attacks rely on the nature of algorithm, what type of algorithm is, plus knowledge of the general characteristic of the plain text, or even some sample plain text ciphertext pairs. These pairs may be from old communications, right? From old communications, they can know the current communication, current plain text ciphertext pairs communication. So this type of attack exploits the characteristics of algorithms to deduce a specific plain text or to deduce the key from key being used. Okay? And the person who does it, the person who is indulged in analyzing the ciphertext and then to get the key and converting it into the plain text, that is the readable text, is called cryptanalyst. So cryptanalyst is the person who uses the technique to break the coded text into to know the key and then converting it into the plain text. Clear? Now, what are the various models of attack? How do these people, these adversaries, attack on the ciphertext, on the message that is being transmitted through internet? So these are basically done in 5 forms. So this classification, these models are based on how much they have the knowledge about the message being transmitted. So one is known ciphertext attack, or we also call it ciphertext only attack. Known plain text attack, chosen plain text attack, chosen ciphertext attack, and these 4 are the main models. Besides, some combinations have also been used. Among them, one is chosen text attack. So we shall know known ciphertext attack. The name is very much clear. The attacker, the adversary, has the knowledge of this ciphertext only. Means here John is the sender, Mohit is the receiver of the message. John sends message to Mohit. Mohit is the receiver. Here is the adversary, Boris. So Boris have the access to this network channel. So whenever John sends a ciphertext, E is the encryption, M is the message. So whenever John sends M, that gets converted into ciphertext, and ciphertext traverses through this channel. Because Boris has access to this network channel, Boris also gets the access to this encrypted message, ciphertext. Okay? So Boris has only the ciphertext, nothing else, not more than that information. Boris doesn't know the key. Clear? So Boris takes all attempts to get the key and then convert it into plain text. So it is a little bit difficult for attackers, adversaries, and for sender, this one is the most secured method, known ciphertext attack. Okay, so here the attacker, that is Boris, can use brute force. Brute force means Boris would use all possible combinations of keys. All possible combinations. Say
the key is of 4 digits, suppose. So he would use 012, sorry, 000, 0001, 0002, 0003. This is brute force attack. So ultimately, Boris can get the key, and after getting the key, the Boris can convert this ciphertext into plain text and can know. Another one is statistical analysis of the ciphertext. Statistically, Boris can analyze the ciphertext, and from that ciphertext, from patterns, Boris can understand, can know what is the key and how it can be converted into the plain text. So this one is easiest to defend for the sender and receiver, but this is most difficult for attackers. Now the second one is known plain text attack. In this case, what happens? The opponent, that is the attacker, has some combination of older combinations, older communications, right? Opponent has the knowledge of older communications. They have access to older plain text. So what does here attacker? That plain text pieces, there might be P1, P2, P3, P4, P5, P5, Pi. So what do they do? That one P1 is converted into a ciphertext C1, P1 C1 pair, P2 C2 pair, P3 C3 pair. So using these pairs, the attackers attempts to get the pattern of conversion, encryption, and from that pattern they get the key and convert the message into plain text message, ciphertext into plain text message. Boris knows some pair of plain text Pi and corresponding ciphertext Ci from the old communications 2 years back, 3 years back, 4 years back. Boris has the accessibility to those plain text and ciphertexts. Okay, so Boris knows the old communications between John and Mohit. That is, analyzes the history of communication, and from that history of communication, Boris attempts to get the pattern of transmission, patterns of communication, and from that pattern the opponent becomes successful to get the key and the plain text message, readable message. Okay, so here we can see P1 has the corresponding ciphertext C1, P2 corresponding ciphertext C2, P3 C3, Pi Ci. Okay, these are old communication pairs of plain text ciphertext, and from this old communication patterns, Boris attempts to get the current message. P star is the current message, new message that is being transmitted, and from that the attacker Boris finds the ciphertext of the current message. Okay, new or current message, and in this way the attacker becomes successful in knowing the plain text. फिर से हम एक बार इसको समझ लें. बोरिस के पास जॉन और मोहित के बीच का पुराने कम्युनिकेशन के मैसेजेस पड़े हुए हैं. उन मैसेजेस को लेकर के प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट के का पेयर्स लेकर के, एक P1 है तो उसका करेस्पॉन्डिंग साइफर टेक्स्ट C1 है, P2 का C2 है, P3 का C3 है एंड Pi Ci. इसके पैटर्न्स को वो चेक करता है. जैसे कुछ ऊपर में लिखा हुआ 1 2 3 4, नीचे कुछ लिखा हुआ, हर कम्युनिकेशन में वो फॉलो करता है जॉन. तो उस पुराने कम्युनिकेशन के बेसिस पर ये जो जॉन P स्टार नया मैसेज भेज रहा है, इसका साइफर टेक्स्ट वो पता कर लेता है. क्लियर? और इसके थ्रू वो की को पता कर लेता है. तो अल्टीमेटली वो व्हाट इज द मैसेज है क्या एग्जैक्टली, उसको करंट मैसेज वो पता चल जाता है. राइट?
तो इसमें बोरिस कोशिश क्या करता है? अटेम्प्ट्स टू गेट मोर इंफॉर्मेशन, attempts to get more information and knows plain text pattern that will appear in a message. So he may be able to deduce key and the plain text. Third one is chosen plain text attack. What happens in this? Sometimes the attacker somehow gets accessibility to the sender's computer. Means some more power has been delegated to the opponent. Means temporary access to encryption machinery is given to Boris, adversary. Now what happens? Boris what does here? करता क्या है, एक P1 एक कोई प्लेन टेक्स्ट है उसको एल्गोरिदम में डाला और वहाँ उसको C1 मिल गया, फिर P2 डाला C2 मिल गया. क्लियर? बोरिस डजंट हैव द नॉलेज ऑफ सीक्रेट की. सीक्रेट की के बारे में बोरिस को जानकारी नहीं है. वेयर इज द की? ये इस सिस्टम में क्या है कि रन टाइम में की नहीं मांगा जाता है, सीक्रेट की नहीं पूछा जाता है. की है कहाँ? की इज एम्बेडेड विद इन द प्रोग्राम. की इज एम्बेडेड विद इन द exe फाइल. सो बोरिस क्या करता है कि इस की को पता करने का कोशिश करता है. कैसे पता करता है? तो P1 दिया, C1 दिया, P2 दिया, उसका C2 मिल गया, P3 दिया, C3 मिल गया, एंड सो ऑन. PI दिया, CI, यानी PI CI पेयर से जहाँ की I का वैल्यू 1 to K नंबर तक है, वो इसके पैटर्न्स को समझा और अंत में उसको क्या होता है, की का पता चल जाता है, कन्वर्ट कर लेता है. यानी गोल उसका क्या है? टू गेट द की एंड द रीडेबल फॉर्म ऑफ मैसेज. So in this case, Boris chooses random plain text among the number of plain text. Boris selects random plain text and convert and obtain the corresponding ciphertext. The goal is to obtain further info about the encryption, which reduces the security of the encryption scheme. The attack can expose after calculating the secret key. कैसे? अब तो उसको की मालूम हो गया, तो होगा क्या? इसको तो टेम्पररी एक्सेस मिला था बोरिस को, तो जब उससे ये पावर छीन लिया जाएगा और तब अगर कोई मैसेज भेजा जाएगा तो उसको तो मालूम है कि क्या करेगा. अब जबकि उसके पास कोई पावर नहीं है, एक्सेसिबिलिटी नहीं है एनक्रिप्शन मशीनरी के का, तो वो करेगा क्या? की तो मालूम है, एक्सेसिबिलिटी उसको नेटवर्क पर है. जैसे कोई मैसेज भेजेगा उस मैसेज में से वो साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेगा एंड ही वुड बी एबल टू नो द प्लेन टेक्स्ट. इज इट क्लियर? फिर से एक बार, बोरिस को थोड़ा टेम्पररी एक्सेसिबिलिटी पावर दिया गया कंप्यूटर पर, सेंडर के कंप्यूटर पर उसको क्या है कि इस एल्गोरिथम, एनक्रिप्शन एल्गोरिथम की एक्सेसिबिलिटी मिली हुई है और ये के प्रोग्राम के अंदर एनक्रिप्टेड है, एम्बेडेड है. तो करता क्या है कि रैंडमली प्लेन टेक्स्ट चुना और उसको एनक्रिप्शन एल्गोरिथम में दिया, उसका एक साइफर टेक्स्ट C1 मिल गया, फिर एक दूसरा प्लेन टेक्स्ट दिया C2 मिल गया, PI दिया CI मिल गया. ओके, दिस की इज इनबिल्ट विद इन द प्रोग्राम. सो डूइंग दिस, बोरिस अल्टीमेटली गेट्स द की and gets the new or current message P star from the new ciphertext or current ciphertext message C star. Okay, this is a challenge to Boris in this scheme to get the secret key K and P star, that is the current message, from the current ciphertext message C star. This is the challenge to Boris. Okay. Now the fourth one is chosen ciphertext attack. इसमें क्या है कि बोरिस जो अटैकर है उसको डिक्रिप्शन एंड पर, रिसीवर एंड पर उसका एक्सेसिबिलिटी मिल जाता है डिक्रिप्शन मिशनरी का. और तब ये क्या करता है? इसका रिवर्स करता है, चूजन प्लेन टेक्स्ट से रिवर्स करता है. ये अब करता है क्या? C1 साइफर टेक्स्ट उसके पास है और C1 देता है, उससे P1 मिला, फिर C2 दिया, फिर P2 मिला.
ओल्ड हिस्टोरिकल, ये सब सारा साइफर टेक्स्ट है पुराना। और इस तरह से CI दिया, PI मिल गया। और इसके बेसिस पर बोरिस क्या करता है कि इसका प्लेन टेक्स्ट पता करता है। की पता कर लिया, और की पता करने के बाद फिर उसका प्लेन टेक्स्ट पता कर लिया। सो अटैकर बोरिस इज गिवन टेम्पररी एक्सेस टू डिक्रिप्शन मशीनरी। Boris chooses some ciphertexts and obtain their plain text. Then attacker uses these ciphertexts plain text pair to analyze a particular ciphertext to break it. The attacker analyzes the chosen ciphertext CI and gets corresponding decryptions to plaintext PI. Ultimately, the goal of attacker is to get the secret key and to get more and more info about the attacked system, and then to get new or current plain text, that is P star message from current ciphertext C star. Okay. Now the fifth one is chosen text attack. In this case, what does attacker know? Attacker knows encryption algorithm. Attacker has the knowledge of ciphertext. Attacker knows plain text messages chosen by cryptanalyst together with its corresponding ciphertext generated with the secret key. Ciphertext chosen by opponent together with its corresponding decrypted plain text generated with the secret key, and the ultimate goal is again to get the key and the plain text message. Okay, so these are 5 modes of attack. First one is the known ciphertext attack. Second one is known plain text attack. Third one, chosen plain text attack. Fourth one, chosen ciphertext attack. Fifth one, chosen text attack. Okay, in this attacker has the knowledge of only ciphertext. इसमें in this plain text attack में plain text को लेकर के, historical plain text को लेकर के उसको cipher text में convert करता है, उसके pattern के basis पर plain text पता कर लेता है। chosen plain text में अटैकर को एक्सेसिबिलिटी मिल जाता है सेंडर का, और उसके एनक्रिप्शन एल्गोरिदम को यूज करके पुराने प्लेन टेक्स्ट को डाल करके साइफर टेक्स्ट लेता है और उसके बाद फिर की पता कर लेता है। चूजन साइफर टेक्स्ट में क्या होता है कि रिसीवर के डिक्रिप्शन एल्गोरिदम पर उसकी एक्सेसिबिलिटी होती है, और उसमें वो साइफर टेक्स्ट को डाल के प्लेन टेक्स्ट पता करता है, और उसके पैटर्न के बेसिस पर करंट साइफर टेक्स्ट के प्लेन टेक्स्ट को पता कर लेता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द क्रिप्ट एनालिसिस। अगले वीडियोज़ में हम कुछ और दूसरी चीज़ों को सीखेंगे। थैंक यू।